हेलो। सभी सब ठीक ठाक चल रहा है। अब आप लोगों का ऑन द जॉब ट्रेनिंग टाटा मोटर्स से वापस आने का समय नजदीक आता जा रहा है। चलिए आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मॉड्यूल 9.9.12 अकाउंटिंग फॉर बिजनेसेस टॉपिक को समझेंगे। मोस्टली इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं? बेसिक ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग, how to calculate the cost of goods and services, simple money tracking templates जो आपके हैंडबुक में दिया है उसको भी एक बार देखते हैं। एज यूजुअल हमारे पास आपके हैंडबुक में जो दिया है थिंक बॉक्स के क्वेश्चन है यू हैव 100 रुपीज, यू नीड टू बाय 3 थिंग्स that you can use in your daily life. So what would you buy? तो आपको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले चीजें खरीदनी है जो कि 100 रुपए का है। प्रोडक्ट क्या होगा और उसका प्राइस क्या होगा ये आपको लिखना है, और उसके साथ में कितना अमाउंट आपने स्पेंड किया है और कितना सेव किया है वो भी लिखना है। दिस इज योर टास्क। नाउ we'll understand bookkeeping and accounting. Bookkeeping versus accounting. So data entry, invoicing, bank record, paying bills, reporting, payroll, taxes, and business analysis. Basically, reporting, payroll, taxes, and business analysis is a major part of accounting. So हमारे पास सवाल है कि बिजनेस अकाउंटिंग बेसिकली है क्या? तो business accounting is a process of managing all money related matter in business. Total earning, total spending, employee salary, loan, cost advertisement, product services cost. इन्हीं सब को जब हम मैनेज करते हैं तो उसे हम बिजनेस अकाउंटिंग कहते हैं। So business accounting includes keeping track of business cost, calculating the right price for your product or services. ठीक है ना? इसमें दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का मोस्टली दो कॉस्ट कंपोनेंट होते हैं, एक वेरिएबल होता है और एक फिक्स्ड होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक टोटल कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर salary is also a business cost. What kind of business cost is it? Why do you think so? तो हमारे पास अगर इंटरप्रेनर कोई है और उसको सैलरी हम दे रहे हैं, सैलरीड इंटरप्रेनर है, राइट? तो वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा या फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा? तो रीजन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट आर एक्सपेंसेस that do not change with the level of production or sales. An entrepreneur's salary is usually predetermined and remain constant regardless of how much the business produces or sell. This makes it a fixed cost, similar to rent, insurance and salary of a permanent staff. दूसरा क्वेश्चन है, Preeti is renting a kitchen to sell parathas for a tiffin service run by her. In this kitchen, rent variable cost है या फिक्स्ड कॉस्ट है ये आपको बताना है। तो ये भी क्या है, एक फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, हमने फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस नीचे लिख रखे हैं, आप इसे देखिए, समझ में आएगा आराम से। ठीक है, मॉर्गेज
rent, loan payment, property taxes, cable interest, phone, utility bill, gym membership. These are the fixed costs. And variable cost क्या है? Entertainment, personal care, shopping, pet expenses, medical copays and car repairs, etc. हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं. सो हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड और सर्विसेज. इसमें प्रोडक्ट प्राइस होगा और प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट? सो बेसिक डिफरेंस, प्राइस क्या है? मनी वी रिक्वेस्ट कस्टमर टू पे इन एक्सचेंज फॉर आवर गुड्स और सर्विस को हम प्राइस कहते हैं. बट व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट is a money we invest into producing a good or service. जो हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, that is called cost. Right? It is done mostly by cost accounting and many other various reasons are there, which includes the cost of a product or services. So, product का cost, quality and customer, price above market, copy market, price below market. So market oriented pricing जो हम तय करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस का, उसी को हम कॉस्ट कहते हैं. सॉरी, उसको हम प्राइस का एक पार्ट रहता है, उसको कॉस्ट कहते हैं. एंड व्हेन वी ऐड द प्रॉफिट ऑन दैट, देन इट बिकम्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज. ठीक है? So how to calculate the cost of goods and services? Let us say the cost per paratha is 500. Market price paratha 30 per paratha. Nobody will buy to paratha for 500. You will have to sell it at a price similar to your competitors. So you will not make any profit from the selling just a paratha. You will have to sell many parathas to cover your total production cost and make a profit. When the money earned from the selling paratha covers your total cost of business, it is called a break-even point. So break-even point क्या होता है? When the invested money is earned as equal by the market what I have invested. जितना पैसा हमने लगाया है, अगर वो हम उतना पैसा मार्केट से मुझे वापस मिल जाता है by selling product और services, उसको हम break-even point बोलते हैं. मतलब जितना आपने पैसा लगाया उतना पैसा मिल गया, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. और उसके ऊपर जो भी आएगा वो आपके प्रॉफिट में काउंट होता है. सो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. राइट? सो इफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ पराठा इज 1000, वेरिएबल कॉस्ट ₹10, selling price per paratha 30, then break even point when we are going to achieve 1000 divided by 30 minus 10 is equal to 50. This means you will have to sell more than 50 parathas at 30 rupees to cover the total cost of the business. After selling 50 paratha, you will start making profit for your business, right? So this is the way we calculate cost of goods or services. Simple money tracking templates as given in your handbook I have projected here. Right. So business expenses and business revenue. Here we will understand what is business revenue and business expenses. ठीक है ना? So money is spent by us on producing the goods or services and keeping the business running. Market. ठीक है? Keeping the business running is the business expenses. And money we receive from selling goods and services by customer to wholesaler is a revenue. Right. So this is the basic difference between expenses and revenue. Right. You can go through this example. You can also use online app for maintaining business accounts. Some of the apps are व्यापार एक ऐप है, माई बिल बुक एक ऐप है, खाता बुक एक ऐप है, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
अब हमारे पास एक्टिविटी टाइम आ गया, मतलब आपको कुछ करनी है। क्या करनी है आपको? सो calculate the total cost of the product or service you are planning to sell as part of your business plan. Remember to include the cost of your own time and skill, your salary as well when you calculate the cost of your product. ये काम आपको करना है. Assume you are going to sell one product or whatever plan you have or the services, and you need to calculate total cost of the product or service you are planning. ठीक है? Include your cost, your own time and skills, and your salary as well. So 5 essential steps to calculate the total cost of your product or services is your business plan, right? So यहाँ हमने 5 लिख रखा है. List all direct cost. सारे direct cost को list out करेंगे. Calculate indirect cost. Factor in your own time and salary, including market and distribution expenses, total everything, and set a profitable price margin. So this is the way we do business expenses cost calculation, right? Pricing of a product or services. ठीक है? So what is our learning in this topic? So our learning is we have understood the how to cost the cost of producing a product or service is both variable and fixed. Variable cost increases or decreases depending on the amount of product or the services we produce. For example, the cost of a paint for a house painting job is variable cost. As the cost increases, if the area that needs to be painted increases, then fixed cost does not increase or decrease depending on the volume of the product or services. For example, the cost of a paintbrush in the above example is a fixed cost. The break-even point of the business is calculated by dividing its fixed cost with the difference between its sale price per unit and the variable cost, right? In order to make profit, an entrepreneur needs to sell more goods and services than his her break-even point, right? We can track expenses and income in our everyday life with the help of basic accounting methods, and using some app or the we can devise some specialized software for my business as well. So this is the gist of the topic. Now we have moved to an announcement. As usual, soon we'll be getting module questions and answers, right? Thank you. Thank you very much. Thank you.